नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जॉशी रेड्डी और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट जॉशी के साथ। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ क्वांटलम, सिल्वरटूथ, कैटसी और स्क्वामिश नेशंस. This Father's Day walk run will be held on June 16th at Burnaby Lake and in Kamloops. Gather your team and participate in a 5, 10, or 10K walk or run. All funds raised will support men's mental health initiatives. अब हमारे साथ आए हैं अमित शर्मा जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आए हैं. तो चलिए सुनते हैं. अमित जी, आपके स्वागत है. स्वागत है आप सभी को फीजी इन फोकस के लिए. मैं हूं आपके साथी अमित शर्मा. फीजी से जितने भी न्यूज़ हाईलाइट है वीक का मैं लेकर आ चुका हूं. नेशन सब्सटेंस अब्यूज़ एडवाइज़र काउंसलर जोशुआ नसेले ने कहा है कि बहुत चिंता की बात है कि ड्रग स्कूल में पाए गए. नसेले ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि स्कूल में स्पॉट चेक हो. हर स्कूल के लिए ये अनिवार्य है ताकि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स है सुरक्षित रहे. ड्रग में मीथेनफेटामिन और गांजा ज़्यादा मात्रा में पाए गए. ये भी कहा कि 2021 में 2003 केसेस पाए गए, 2022 में 2700 केसेस पाए गए और 2023 में 3500 केसेस पाए गए. ये नंबर्स जो है ये बढ़ रहा है क्योंकि जो महिला हैं स्टूडेंट्स ये भी ड्रग लेना शुरू कर दिया है. और उधर चलते हैं. पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया है कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका वेतन और भाटा में बदलाव आएगा. फीजी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश लाल ने कहा है कि उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए जो फिर दिक्कत का सामना कर रहे हैं परिवार की मेज पर भोजन लाने के लिए. 23 मेंबर टीम जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, स्पेशलिस्ट फीजी आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से. 20 मुफ्त में लाइफ सेविंग ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए साउथ पैसिफिक और फीजी के बच्चों के लिए साई संजीवनी हॉस्पिटल सुवा में. इस टीम ज़्यादातर क्वींसलैंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से, ब्रिस्बेन और साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस पापुआ न्यू गिनी से. और ये इस 23 मेंबर टीम का सर्जिकल मिशन है. उधर नुकुलाउ आइलैंड में अपने फीजियन डिज़ाइनर्स को प्रदर्शन की अपने संस्कृति और विरासत का 17th वोडाफोन फीजी फैशन वीक में. FFW के तोमासी तुइदामिया ने कहा है कि ये एक बहुत अच्छा मंच है अपने लोकल डिज़ाइनर्स के लिए, वो अपना प्रतिभा दिखा सके. FFW में भाग लेने वाले में थे जुल्फ़िकर अली, हॉपफील्ड होडा, ट्रेसी एन और साथ में सोनिया तंबुना जिसने अपने संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया. फीजी पुलिस फोर्स ने 1 मई से लेकर 24 मई तक 2080 गाड़ी चालकों के स्पीडिंग का छलांग काटा. पुलिस ने मांग की है गाड़ी चालकों से कि कृपया अपने गाड़ी का जो स्पीड है उस पर ध्यान दें. अपने और बाकी जो गाड़ी चालक है उनकी सेफ्टी का ध्यान देंगे. 57 वर्ष के नौशरी अस्पताल ले जाया गया. ओवर स्पीडिंग से उनकी गाड़ी काबू से रास्ते से बाहर हो गई. वेस्टर्न डिवीजन में एक वृद्ध महिला को चोट आई जब उनकी 32 वर्ष के बेटे ने ओवर स्पीडिंग के कारण से रास्ते से बाहर हो गई. ये घटी है तुवु लोटोका में. डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेतेली दिवाउन ने मांग की है कि गाड़ी चालक अपनी स्पीड पर ध्यान दे. अब चलते हैं कुछ खेलकूद के समाचार. स्पोर्ट्स में वोडाफोन फीजी 15s की जीत टोंगा के खिलाफ 48-3 से हुई. ओशनिया रग्बी वुमेन्स चैंपियनशिप में वोडाफोन फीजी के 15s ने अपने पूरे खेल का प्रदर्शन किया कि वो अपना जगह 2025 वर्ल्ड रग्बी कप में बना सके. उधर साउथ पैसिफिक बॉक्सिंग प्रमोशन ने पहली बार अपना जो बॉक्सिंग इवेंट है उसको लंबासा ले जा रहे हैं. फीजी के जितने भी बॉक्सर्स हैं इस इवेंट के लिए उनको अब लंबासा जाना पड़ेगा. उधर फीजी फेक टूर्नामेंट 2024 सुब्रेल पार्क लंबासा में होने जा रही है. फीजी फुटबॉल एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि लंबासा टाउन काउंसिल पूरी तरह से तैयार है
इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए। तो ये थी कुछ न्यूज़ और अपडेट्स, और मैं हूँ आपके साथी अमित शर्मा फीजी फोकस के लिए, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए गुड बाय, नीसाम बुला। आपके बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो, या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of InvestCraft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. अब हमारे स्टूडियो में आए हैं रिजवान अब्बास जी, जो कोई कुछ गिरमितिया के विषय में बात करेंगे एंड उसी के साथ में साउथ एशियन म्यूजियम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। प्लीज हैव अ लिसन। हेलो एंड वेलकम टू फीजी इन फोकस। नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। जी हाँ दोस्तों, आप फीजी इन फोकस को देख रहे हैं और हमारे गेस्ट आए हुए हैं हमारे स्टूडियोज में, मिस्टर रिजवान अब्बास, एंड ही इज़ द आर्कियोलॉजिस्ट, वर्क राइट हियर विद द फर्स्ट नेशंस। एंड आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि हमने अभी लास्ट 2 वीक्स मई 14 को यहाँ पे गिरमिटिया रिमेम्बरेंस डे को ऑब्जर्व किया। सो उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट that we have come together to make sure that our Girmitias are not forgotten. So Rizwan, welcome. Thank you for having me, Camilla. Yeah. So you are the brain mind behind this Girmitia. Thank you. You started that Indo-Fijian Cultural Society of Canada. Yeah. It's one of the organization that this is just one of the project, but we're going to be doing other things as well. So tell me, you are part of that. How did it go for you? Sure. Well, the Indo-Fijian Cultural Society of Canada, I mean, you're a director as well on our society. And the intention for our society was to create an identity for the Indo-Fijian people here in the Lower Mainland in Canada in general. So one of the things that we had decided, actually, when I was watching TV, I'd say a couple of years ago, we were watching the Girmit Day events from Fiji. Gee. And it was online on YouTube. And the then Prime Minister of Fiji was talking about Girmit celebrations and talking about celebrating Girmit. And there was dances, performances, and plays, and all this festivities happening around Girmit Day. And after I watched the event, I started thinking to myself about this day, Girmit Day, and the celebrations that were happening on Girmit Day. And it didn't quite make sense to me. It didn't make sense to me that we were celebrating Girmit. And as the Prime Minister was saying, Girmit celebrations and celebrating Girmit, I didn't find the two words make sense. Yep. There's nothing about Girmit to celebrate. And for the viewers, if you don't know what Girmit is a derivative of the word agreement, which is the agreement of the actual indentured labor that the people were doing in Fiji. So Girmit basically stands for indentured labor. Gee. So there's really nothing to celebrate about indentured labor. And the more I thought about it, and I spoke to some other people about it, and they talked about Indian Arrival Day and celebrating Indian Arrival Yeah. Day on May 14th as well, because Yeah. 1849, May 14th was the first time the Indians from India set foot on Fiji soil. So even that day, if you put it in perspective, that day on May 14th, 1879, when those people got off the boat, that was not a happy day for them. No. They were lied to, they were tricked, they were stripped of their caste, they were stripped of their identity, they were brought like prisoners to Fiji and then put into prisons before they were taken like slaves to plantations all over Fiji. Now mind you, they were only doing indentured labor for 5 to 10 years, and it was not like slavery like a whole lifetime. But nonetheless, this was not what they agreed on when they signed their indentured agreements in India. So I don't believe that there's even anything to celebrate for Indian Arrival Day. As a matter of fact, that day is a black mark Yep. on the history of Fiji for what atrocities happened to our Girmitia ancestors. So with that in mind, I set out to reclaim the day. In the efforts of reconciliation, I decided that would be a day that would be better observed as a solemn day to recognize the resiliency of our
Girmithia ancestors. As opposed to celebrating Girmith, I want to celebrate our people, our ancestors. So what we did was we observe Girmithia Day instead of celebrate Girmith Day. And on that Remembrance Day, we remember the atrocities that happened to our people, but we also remember their resiliency and their hard work and their sacrifices to enable us to be where we are today. So in the effort to reclaim the day, we want to make it more a day that we challenge the people who put us into indentured labor. We talk about those stories and we celebrate the resiliency of our people. We do this with stories. We do this with a forum where people can speak about their own impressions about being Indo-Fijian here in Canada, and we also have a moment of silence. So it's very similar to how we honor Remembrance Day with our fallen soldiers. We honor Girmithia Day with our fallen Girmithia ancestors. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग कि इन डेप्थ में आपने सभी को एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हमें इस डे को ऑब्जर्व करना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, so that we don't forget, our children don't forget, and their children don't forget. We don't want to lose history. अच्छा, हमने एक इवेंट किया था पब्लिक लाइब्रेरी में. There were quite a few people that showed up, and it was very successful event. People spoke up, and there was one person that is son of a Girmithia, he was there, and there was some youth panel. They want to know what they know from the parents. So it was, I think, as a whole, when I'm sitting and looking and thinking about it, that it was a resounding success for the first celebration, for the first observation of the Girmithia Day. Well, just to clarify, we did have a Girmithia Day observation last year as well, which we held, the Indo-Fijian Cultural Society with the No Ties 1879 podcast. But this year we decided to do something a little bit smaller and more intimate than we did the first year. And yes, I do think it was quite successful. We had a lot of people show up. We had a lot of food, which is great. We have to thank both Juns and the Honorable Bobby Niker, Consulate for Fiji and Canada, for sponsoring the food for us. Yes. And I think what was the best part about this observation was that we had a forum, and we had both youth and we had elders from our community sit in the forum and speak about their experiences about being Indo-Fijian in Canada or about being Indo-Fijian in Fiji. And one of the things that came out of that was that all our experiences were very similar. As Hindustanis in Canada, as Fiji Hindustanis in Canada, our experiences of being in this larger South Asian community and in this larger Canadian society, we had a lot of similarities between our people. And I think that's something that we need to build on. We need to build on the similarities of our culture. We need to build on that foundation so we have a strong foundation for the Indo-Fijian culture. And this is this is where it starts. It starts with open forums and discussion, like we had at Girmithia Day. And I think that is behind us now. So we'll plan a bigger one for the next year. So stay tuned. We'll be putting it out in here so that you can participate and come out and observe next Girmithia Day on May 14, 2025. Yes. Thank you so much. Thank you. शुक्रिया रिजवान जी. हमारे पास कुछ public service announcements है. Please have your pen and papers ready. Coming Together for Mental Health will take place on May the 31st at Aria Banquet Hall in Surrey from 6 p.m. till 11 p.m. For tickets and more information, please contact Kieran Tour at 778-320-6540. This month is South Asian Heritage Month. The Government of BC is planning to build a South Asian museum in the Metro Vancouver area. Please go online and fill out the questionnaire to voice your opinion. It only takes 5 minutes and is very simple to complete. They also want to know what you would like to name the center and where you think it should be built. You have a significant say in this process, so exercise your right and fill out the questionnaires at engage.gov.bc.ca /182261 *LANG =EN. The World Partnership Walk is on June the 2nd at Lumberman's Arch in Stanley Park, Vancouver. Registration starts at 9 a.m. The doors open at 10 a.m. Your participation helps combat global poverty
as proceeds from this event support the Aga Khan Foundation initiatives. Visit www.worldpartnershipwalk.ca for more information. The annual Kidney Walk for the Fraser Valley, Surrey and surrounding areas coming up on June the 2nd. Help bring awareness and support those who amongst us that are living with kidney disease. The Kidney Foundation of Canada, BC and Yukon branch supports those who are on dialysis, those getting transplants, donors, and much more. Registration and participation is free. You can register at kidneywalk.ca. If you are celebrating your loved one's birthday, you can send all the information with their photos to fijifocus21@gmail.com. Now let's see some highlights of Such Society fundraising. Please have a look. Sorry about that technical snag. Hey, टिम्पू, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। होती रहती है सिनोरिटा। Sorry about that, guys. Technical snags होती रहती हैं। So ये
गाना मैं फिर से गाऊंगी। All right, give it up for Dance Company.
Big round of applause. Berkeley Central Secondary, you did an incredible job. Thank you so much for being a part of our event. At this time, we would like to invite the Such Board back to the stage and the PHI Hotel Group as well. Members from there, thank you so much. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. थैंक यू। अब समय हो गया हमारे जाने के और आपके और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। Keep watching Fiji in Focus Tuesdays at 10 p.m. and Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. and Alberta में 5 p.m. Sponsorship के लिए कॉल कीजिए Camilla को at 604-537-5123। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर क्रेडिट्स में दी गया है। Before I leave, I will leave you with these thoughts. Waste no more time talking about great souls and how they should be. Become one yourself. Marcus Aurelius. अपना और अपना फैमिली के ख्याल रखना। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विनाका और नमस्ते।